जब स्टार्ट कर रहे थे तब अंदाजा नहीं था कि लोगों को ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी कि प्रोफेशनल से बातचीत हो रही है, ऐसे स्टूडेंट से बातचीत हो रही है जो माशाल्लाह अपना कैरियर स्टार्ट कर चुके हैं, अपने कैरियर में कहीं स्टार्टअप स्टार्ट किया, कोई अभी मास्टर्स कर रहा है, तो हर कोई अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है। जो जर्नी उनकी मिडिल स्कूल से, हाई स्कूल से, ओ लेवल्स, ए लेवल से होते हुए, मैट्रिक इंटरमीडिएट से होते हुए वो जा रही है यूनिवर्सिटी में, उसके बाद अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो वी ह्यूमंस ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच अदर। हमें हमेशा जिंदगी में एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है टू मेक अस कीप गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ शामिल हैं आदिल विरानी। आदिल विरानी क्या करते हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ा, किस फील्ड के अंदर वो अपनी डिग्री उन्होंने परस्यू की, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, कौन से मुल्क में हैं, वहां सेटल डाउन होने के बारे में क्या बातें वो बता सकते हैं। सो लेट्स वेलकम आदिल ऑन बोर्ड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल, क्या हाल है? शुक्र शुक्र अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू आदिल फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस एपिसोड ऑफ गेट सेट गोल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। आदिल, अपनी जर्नी स्टार्ट करें समवेयर फ्रॉम योर grade 8, grade 7, something like this. Grade 7, grade 8, yeah, that's a long time. Yes, I'll try to keep it precise. So, grade 7, grade 8 was, I think I was at Beacon House ठीक है। for my O levels. So, I think at some point, मुझे याद है, and please stop me, sir, like if you think I'm going in too much detail. नहीं नहीं नहीं, no issue. So, yeah, I think grade 7, grade 8, man, like I think you haven't decided yet whether you're doing O levels or you're going towards like the local system. So at that point, I do remember that I was not that serious towards my studies. I remember that I think the first year आपको Park Studies or Islamiyat के exam होते हैं. I think the first two exams. Grade 10 में. Grade 10 में, exactly. So उस grade 10 के अंदर like I was failing drastically in my PAC studies and Islamiyat exams. और टीचर ने बुलाकर मेरे पेरेंट्स को बोला कि like just be prepared, you might have to shift into the metric system, right? So I was not that serious about studies at all. The only thing I was really serious about was mathematics. So mathematics I always excelled at, but everything else was just falling through the cracks, right? So उसके बाद something hit. I think something hit at that point. I was like, I took it as a challenge that the teacher ने कहा है कि he can do better, but I wanna prove it wrong. So उसके बाद रातों रात स्टडियाँ, उसके बाद midterms की preparation, and then O-level exam, and then alhamdulillah, like I ended up with the A. At that point, there was no A star like these days, but an A I ended up with. So And at which that year point, was that, आदिल? कौन से साल आपने O levels का एग्जाम दिया? 2008 में मैंने A level start किया, so it would have been 2007, I would think, जब मैंने इस्लामियत और पाक स्टडीज दिया था. अच्छा, so 2007 was O2, grade 10, और 2008 में आपने O levels दिया. ठीक है? Correct. सही, सही. Please continue. Exactly. So बस उसके बाद I think it was something that ignited within me that well, I can do it, right? If I can do it on these two subjects, and if I can put my mind to something, that I can accomplish anything, right? So it was just a mindset change, I would say, at that point. After which, I think when I was choosing where to go for A levels, options थे थोड़े. सबने कहा था कि भाई KGS चले जाओ, KGS is the best. But I remember I had an 89 in English. So just by one mark, and the KG has had that criteria that you need certain number of A's to get in. So I couldn't get in. So I ended up at Lyceum, which was, I think, a blessing in disguise, I would say. It was amazing. So वहाँ मैंने 2008 में start किया A levels. वहाँ पर आपसे मुलाकात हुई further mathematics के through. So that was another milestone I like to highlight is के, and I do remember one thing, sir, you said in 2009 at some point. I think you were teaching us further statistics. बिल्कुल.
And at that point आप एक दफा आए और आपने कहा आदिल, like you have potential, you can go for distinction, and something clicked. I'm like, if this person trusts me, like I have to make it happen, right? So I do remember that you had seen that potential. So after that, I gave everything I had, and alhamdulillah, I ended up with the distinction. So thanks to you on that. जज़ाकल्ला। यानी आदिल, अभी आपने ये बात कही कि टीचर के कहने पे, सो आई मीन जैसे होता है ना, एक वो चिलिंग इफेक्ट होता है, गूज बम्प होता है, कि कभी Correct. कभार हमारे एज अ टीचर कहे हुए अल्फाज यानी बच्चों की जिंदगियां कितने बदल देते हैं, चाहे वो Totally. पॉजिटिव अल्फाज हो चाहे वो नेगेटिव हो। आई मीन ट्रू, आई मीन माशाल्लाह से आदिल ने फर्दर मैथ्स में डिस्टिंक्शन ली। अब मुझे ये याद नहीं है आदिल, आप बताएं, वाज इट लाइक द वर्ल्ड डिस्टिंक्शन, पाकिस्तान लेवल डिस्टिंक्शन, कौन सी वाली थी, ये मुझे याद नहीं है। Pakistan distinction, sir. पाकिस्तान डिस्टिंक्शन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ. फर्दर मैथ्स वहां पर मैं स्टैट्स का पोर्शन पढ़ा रहा था, सबसे जो आसान पोर्शन में कहूंगा वो मैं पढ़ा रहा था। और जो मेरे कलीग थे, मेरे सीनियर सर शमीम आजम, माशाल्लाह जी. वो मेरे ख्याल से प्योर मैथ्स पढ़ा रहे थे। और मिस Correct. सना अल्लाह वाला, शी मस्ट बी टीचिंग द मैकेनिक्स पोर्शन, या I नौशीन think so, थी। yeah. Or no, Yoshin, I think. नौशीन होगी, नौशीन लोटिया, शी इज Ah, इन not पीडीएफ Yoshin. राइट नाउ। तो Not Shin. माशाल्लाह उन्होंने पढ़ाया, चले माशाल्लाह। हाँ. तो फर्दर मैथ्स का एक्सपीरियंस, और मुझे जहां तक याद पड़ रहा है कि उस जमाने में फर्दर मैथ्स हम लोग एक साल में करते थे। आप लोगों ने एक्सेल किया होगा सर शमीम आजम के साथ, Correct. और अगले साल जो है वो आप लोगों ने एक साल के अंदर फर्दर मैथ्स किया होगा। That is exactly right. That is exactly right. सही Yeah. सही। तो फर्दर मैथ्स का एक्सपीरियंस आप बच्चों को कुछ बताएंगे, यानी कौन कौन सी फील्ड्स है जिसके लिए फर्दर मैथ्स लेना चाहिए, और कौन सी फील्ड ऐसी है जिसके लिए ए लेवल मैथ्स काफी है? Mm-hmm. I would say कि it's not specifically, I would say, field related, as in के okay, आपको maybe you want to go on one side, then you have to have further math or not, but it's more mindset, I would say. Like तो मुझे क्या फायदा हुआ further math का, I would talk about that, is and that might give you a little bit of a perspective of the benefits of that, is जब मैंने further math लिया, so it opened my mind for different possibilities of how to tackle different things. So I remember कि uh, I'm not trying to kind of degrade any math or something. Like A level ka math itself is a beast itself. But I think when we started off with further math on second year, A2, it was another level, another game, right? Further math is just, that's why it's called further math, right? But it was another game, something which was very challenging. So first of all, जब मैं कनाडा आया तो यहाँ पर जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो यूनिवर्सिटी का था, whatever math they talk about, it was a piece of cake, right? Because you had done further math, और उसमें हमने काफी सारी चीजें देखी थी, और मेरा जो कोर्स ऑफ स्टडी था वो, जिसकी तरफ अपन हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन it was actuarial science, so it involved a lot of math, so it really helped because उसके अंदर जो सारे statistics, जो risk management के लिए आप models रन करते हैं, statistical models, that helped a lot, I would say. सही सही। अच्छा, तो आदिल, आपने यूनिवर्सिटी के बारे में अपने बताया कि आपने फिर ए लेवल्स करने के बाद यू वेंट अब्रॉड एंड यू वेंट टू कनाडा। Correct. Yes. So 2010 में जब सारी एप्लीकेशंस चल रही होती है A2 की, very stressful times for students, unfortunately, but it's like you get the grades and you're like, okay, which conditional offer did I meet, right? Like, where am I going? So alhamdulillah, at that point I had multiple options. I ended up, Canada was always one of the top options I wanted to go because of multiple reasons. It's just I had heard that it has a different cultural standing compared to US or any other country. It's just more diverse. Like I would be able to easily fit in. University of Waterloo was a well-known university for the program I had to do, जो कि actuarial science था. And one thing which was very important was the University of Waterloo having something called the co-op program. So it's where you can work one term and study one term that helps you with the experience, as well as you gain some financial freedom that way as well, so that you can pay for your next term tuition. So वो हाँ, मैं 2010 में कनाडा गया और 5 years का program था. It's because you alternate, so you're not studying all whole year, so that's why the program is longer. So 5 years program, but at the end of those 5 years, you have 2 years worth of work experience, which is awesome. सही सही। सो द थिंग इज के इसमें आप समर्स भी इंक्लूड कर रहे हैं,
So there is the spring semester, the summer. अगर मैं term semester की बात करूं versus the quarter, तो इसमें 1 by 1 करके it took 5 years, जिसमें 3 साल में आपकी डिग्री हुई और 2 साल में आपका work experience हुआ. Yeah, so exactly how it works is like at least there are multiple options. So hua ye ke first 2 terms. So when I say semester, it's about 4 months. So in a Okay. year there are 3 semesters. 3 semesters. So so जो मेरा program था, जो मैंने stream ली थी, it was study 2 terms, and then you work 1 term, and then you keep alternating, right? So there's never a break. There's never off time, right? ठीक है. But there are different options you could make. Like आप बोल सकते हैं कि like मुझे जो है वो हर साल break लेना है, तो मैं तीन term काम करूँगा, 3 term break लूँगा. So you can schedule it in a way, but for me it was not an option. I'm like I have to make ends meet, so I have to work to pay for the next semester, right? अच्छा अच्छा. I mean that's a very similar story to mine कि मैंने जब मैं यूएस किया था बैक इन 91, तो उसी में मैंने समर वेकेशन में यानी बहुत ज्यादा काम किया था और एक आध सेमेस्टर आई हैड टू ड्रॉप इट ऑफ बिकॉज ऑफ के फाइनेंसेस मीट करने थे. सो आई कैन अंडरस्टैंड द जर्नी दैट यू वेंट थ्रू. और ये आखिर में उस वक्त तो मुश्किल लग रहा होता है, बट व्हेन यू टर्न बैक एंड फिर आपको लगता है कि आई मीन इट वाज अ पीस ऑफ केक. लेकिन अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह उस जर्नी से निकाल लेता है. इंसान की अपनी डिटर्मिनेशन होती है, परसिस्टेंस होती है, एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग. यानी लोग बैठ के थियोरेटिकल बातें करना बहुत आसान है, यूएस में या कनाडा में या यूके में उस जगह पे बैठ के काम करना और पढ़ाई Yeah. मैनेज करना. सो आई मीन सल्यूट टू यू कि माशाल्लाह, आई मीन यू वेंट थ्रू दिस सक्सेसफुली. Yeah, तो alhamdulillah, alhamdulillah. Yeah, it's a tough journey, as you said, but I would say at the end of the day, it's all about your, as you said, determination and persistence. Just having in mind your big picture, like what you're trying to accomplish. And at the end of the day, just आपने कहा कि theoretical everything looks good, right? You know, when you're in Pakistan, you're like, जब जाने से पहले मैंने भी बहुत planning की थी कि यार things will work out this way, things will work out this way. Uh, you have a lot of different version of your freedom that you're like, oh, मैं वहाँ चले जाऊँगा, अम्मी अब्बू नहीं है. You can have all the freedom you want, but believe me or not, in a week, 2 weeks, it's a party for a week, 2 weeks, and then you're back to reality. Okay, this is where I am, right? So I have to manage everything on my own. ट्रू. तो आदिल ये बताएगा कि जब आप कनाडा गए इन 2010 की, यानी आप अगस्त सितंबर में पहुंच गए होंगे कनाडा, जी और जी फिर जी. आपने 5 साल माशाल्लाह कनाडा में रहे. सो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में आपका वहीं ऑन कैंपस आप रहे या ऑफ कैंपस रहे? क्योंकि बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हाउ इज द लाइफ ओवर देयर. क्या ऑप्शन है उनके पास ऑन कैंपस वर्क करने का, वीजा की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से? किस तरीके से फाइनेंसेस उस जमाने की, ऑफकोर्स जो भी फीस स्ट्रक्चर था, तो उसमें से आपने किस तरीके से उसको पूरा किया? घर की तरफ से आपको कितनी फाइनेंशियल सपोर्ट थी? इफ यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट इट. Sure, 100%. Yeah. So on a high level, like I would like to say कि जो मेरे father है, he's a very well planned person. So he likes to plan everything on paper before taking any chances, right? He's like, okay, let's plan. So I remember university जाने से पहले, up until like a year and a half before, he was like, let's sit down. मुझे बताओ कि website से check करके कि okay, how much does this semester cost? How much is the lodging fees, which is like for your on residence stay? How much is the food fee? Or like, okay, we'll add in a buffer, you know, we'll just to see if we can work it out. And I think he planned quite a bit. And I was not that much into finances at that point. I remember like, ho jayega ya nahi hoega, just tell me that, right? So we were like, you know, I'll make it work. It'll be tough, but you know, I can get you started first 2 semester, which was I can tell you exactly at that point. जब फीस थोड़ी कम थी, आज अब तो डबल हो गई है तकरीबन. अच्छा. लेकिन at that point it was, if I remember correctly, 11,000 Canadian dollars per semester. That includes the tuition fee as well as the boarding, lodging? No, that's just tuition. That's 11,000 institution. Canadian. Okay. 11,000 Canadian for 4 months, and I think right now when I checked last, it was about 17 for the semester. So because it's 10 years back, right? Sahi. So
So at that point, like my father was like, well, I can get you started in first two, जो मैंने आपको कहा कि first two semesters जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, उससे पहले आप काम नहीं कर सकते. So I think I remember मेरे father ने हर जगह से he scrambled through for finances. He's like, मैं इधर से कुछ निकालूं, उधर से निकालूं, and then I knew that how he struggled to get that money. उन्होंने मुझे बेच दिया. उन्होंने कहा कि I will do whatever I can. But he told me our financial situation. He's like, we have, like, you have to work and we have to make ends meet, right? So उसके बाद जब मैं कनाडा आया तो at that point जब आपने एक सवाल पूछा on campus and off campus का, so on first term क्योंकि हम किसी को नहीं जानते थे कनाडा में, it was a completely new experience. It was nobody could go look out कि ये property कितनी दूर है university से, so we always went for a safest option which was on campus, जो हम वहां से ही ले सकते थे पाकिस्तान से. सही सही तो उसके अंदर जब हम on campus गए तो first 8 months I was on campus. And after that, because 8 months में I figured out which areas were good, which areas were not that good, कितना दूर है university से, कितना करीब है. Then I went off campus because it was a little bit cheaper, right? तो इस तरह और जब आपको मैंने fee structure बताया तो उसके अंदर फिर जब 8 months खत्म हुआ, then it was the reality hit, right? Like you're like, okay, I have to get another 11,000 ready for the next semester, right? So जो co-op experiences था, that was like an office job, so that's related to your field. बाकायदा बाकायदा आपको वो करना पड़ता है पूरी application process, and then you have to go for interviews and stuff, and then you get selected, and then you have this job for 4 months. तो उसके through आपको, I would say at that point $6,000-7,000 आपको 4 महीने के उसके through आ जाते थे. And then I used to tutor part time, which was always I used to do in Pakistan as well. Tutor करता था तो उसके through मुझे $2,000-4,000 उसके through आ जाते थे. And then I would also do some odd jobs like on a coffee shop या snow shoveling हो गई weekend पर, just to gain some extra cash. So that made up. And then whatever was remaining, there were always time I would call my dad and like, hey, Abba, like $2,000 कम पड़ रहे हैं. आप कर सकते हैं तो. Family was really supportive, I would say. Yeah. अच्छा माशाल्लाह. ये जो आपने कहा था कि ट्यूटर करने के बारे में, सो इज इट लाइक द कॉलेज का यूनिवर्सिटी का अपना कोई प्रोग्राम था जिसमें यू गेट पेड ऑन अ आवरली बेसिस, समथिंग लाइक दैट? So दो प्रोग्राम थे. एक यूनिवर्सिटी का मार्कर प्रोग्राम था जो यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं जो प्रोफेसर्स वगैरह बच्चों से लेते हैं, तो वो आपको ठीक है मार्क करने की एक जॉब होती है. ठीक है. But that's very minimal. Like I think they pay you, if I remember correctly, at that point, $18 and $19 an hour, which was a little bit above minimum wage. लेकिन मेरा जो majority revenue आता था वो personal tutoring के through आता था. तो like I would post ads और hourly rate उससे काफी अच्छे मिलते थे. At that point, I remember I think $40-45 an hour I would charge अच्छा माशाल्लाह. for tutoring. और कभी कभार group बन जाता था 3-4 लोगों का. अच्छा, So that's like a lottery, right? Like you're making 40 per person per hour. That gives you दैट्स प्रीटी लुक्रेटिव. और ये जो है ये कौन से लेवल के स्टूडेंट्स होते थे? ये आपके यानी एक टर्म या 2 सेमेस्टर जूनियर होते थे या फॉर एग्जांपल हाई स्कूल वगैरह के स्टूडेंट्स होते थे? नहीं तो ये जो इतनी ज्यादा अमाउंट सिर्फ I think it's only for university students. Like high school students, their parents wouldn't pay more than 15-16 an hour, right? अच्छा It's more university जो जैसा आपने कहा कि एक दो सेमेस्टर पीछे, या I even tutor students जो मेरी क्लास में थे. Like I would tutor them after. So that's something I figured out early on कि like if I like आपको शुरू से पता है कि like further math और जब मैंने किया था तो उसके लिए you don't need to know कि like आपका mind थोड़ा open होना चाहिए कि you don't need to know कि ये तरीका इसी तरह fit होगा. You need to know a high level concept to understand that because questions are very different. So that I think was the concept in my mind from that A-level thing, is that I need to understand the basics of everything, and then every question that shows up is just a complicated version of those basics, right? So so that's what I think helped me with that tutoring, because tutoring अंदर सवाल आएंगे इधर से उधर से, and then how you answer them, you cannot be like I don't know, right? Because that guy is paying you, right? Some money. So right. so आपका वो चीज बहुत वैल्यू रखती है at that point in time. सही माशाल्लाह से आदिल आपने बहुत अच्छे से समझाया. आज इत्तेफाक की बात है सुबह जो
कॉलेज में इस वक्त ए लेवल्स के अर्ली बर्ड एडमिशन्स वगैरह होते हैं, आपके ज़माने में शायद अर्ली बर्ड का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसमें जो बच्चों को एकेडमिक्स और उनके पेरेंट्स को मैं बता रहा था, तो उसमें यही बात निकली कि जो फोकस होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप चंद पास पेपर्स के क्वेश्चंस रट्टा मार लें। अनफॉर्चुनेटली पीपल डू दैट, पीपल ट्राई टू डू दैट, दे थिंक दैट इट इज पीएसटी या इस्लामियात या उर्दू में तो चले नहीं होता है, लेकिन वो दो सब्जेक्ट्स में होता है। असल चीज है उसका कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चन एक एंगल से नहीं आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती है, इनइक्वालिटी भी आ सकता है, कंप्लीटेड स्क्वायर भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। अनफॉर्चुनेटली आजकल पीपल आर गोइंग ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बस यानी बस ये हो जाए और बस मुझे आंसर आ जाए, यानी मैं मेहनत नहीं करूं। सो आई मीन दिस नीड्स टू चेंज। सो फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, माशाल्लाह जिस तरीके से आपने समझाया कि आपने उस जमाने से जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम किया, समझने पे काम किया, आई थिंक दैट इज पेइंग यू ऑफ टिल नाउ। ना सिर्फ जी आप ट्यूटरिंग में आपको मदद कर रहे हैं, बल्कि आपके अपने करियर में भी डेवलप कर मदद कर रहा होगा, ठीक ठाक। 100%, 100% on that sir, like I would say, like even arch, like bringing it to the present, like when I worked for a company जिसमें मैं pricing lead करता हूँ commercial insurance की, तो उसके अंदर like in reality things are very different compared to the theoretical stuff. तो आपने पढ़ा होगा modelings, लेकिन आप जब reality में आते तो आपको ये चार अलग चीजें आ रही है, how do you take care of it? But believe me, at every point in time this mentality has always helped me कि go down to basics, right? Like basics are always the key. I always see as a complicated problem as a combination of 10 simple problems, right? It's just come together as a complicated problem. So I like to break things down to the basics, and then I know the basics. Basics, so shuru se, that's why whoever is listening right now for A levels, O levels, I would like to say that one thing that helped me a lot was understanding the basics really well, because if you see the questions and you understand the questions, that doesn't help you at all, because if you understand how question one was done, that just helps you understand कि वो question one कैसे हुआ था, but it doesn't help you to understand how question two would play out. True, true. So I would really say anyone who's listening A and O levels that try to understand, take that question, that past paper question, but understand why they did what they did, you know, because if you understand the why, then you can take that why and apply to wherever you want, right? So that's one thing I would say. सही, माशाल्लाह। तो आदिल, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, फिर आपकी जो डिग्री थी यू डिड इन बैचलर्स, आपने किस में किया, एक्चुरियल साइंस में? Actuarial science or statistics, double bachelors. अच्छा, डबल बैचलर। अब बहुत सारे लोगों को एक्चुरियल साइंस के बारे में नहीं पता, सो इफ यू वुड एनलाइटन देम ऑन दिस। 100%, would love to. So of course, like one thing I would say, it's very common, like actuarial science, a lot of people don't know about. Even in Canada, like I was surprised कि I think मैं अपने एक दफा बाल कटवाने गया था, तो मैं बोल रहा हूँ उसको, उसने कहा कि आप क्या करते हैं, मैं बोला I'm an actuary. So he's like, I don't know, explain me. So it is very common, like here in Canada as well, not a lot of people know about it. But in simple terms, in layman terms, what I would say, actuarial science is someone who takes a risk, like whatever the risk is to anything, your life, your portfolio, investment portfolio, your assets, any risk, और उसकी उस risk को monetize कर देता है. So puts a dollar amount or a monetary amount associated to that risk which is figured out. So that's where the actuaries come in. So that's why, by nature of what I just explained, the majority need of actuaries is an insurance business, just for the sake of it, because insurance is taking a risk and putting a price to it, right? But again, let me tell you that that's not the only thing, which we'll talk about in a sec. But actuarial science, 90% actuaries are in insurance industry. But as I said, as long as there is risk and requires a monetization, actuaries would be required. अच्छा, तो इसमें आपको किस चीज ने मोटिवेट किया टू परस्यू एक्चुरियल साइंस एंड मेजरिंग इन स्टैटिस्टिक्स? Yeah. So ये decision तो like जाहिर सी बात है, for that I had to make a decision back in A levels, right? Like when you're applying कि भाई किस में apply करना है, you wanna, at that point, unfortunately or fortunately, you know, the way the system is set up, you don't know, like I would say personal experience, I did not know much कि मुझे क्या करना है. Like at that point,
I remember I was just interested in going to Lyceum and play table tennis, and that's it, and do some math. I love math, but other than that, I was like, everything else was like, okay, I have to get it done because it's required. But अच्छा, unfortunately, the whole system, the way it's set it up, is that you figure it out once you are in university what you really want to do. So it's very common. Let me tell you that it's very common for people to come for a certain major and then change it for in the first couple of years. Uh, how I decided, as a very funny story, is because what I had in mind was that I want to do something which is numbers related. I just knew that. I did not. I was not a. I would say I wanted shortcuts at that point. So I was like, मुझे मेहनत नहीं करनी कि क्या कौन सी university जाना है. And my brother, who also is an actuary here in Canada, he's 2 years younger than me. So he was always so diligent about his research. Even though I was in grade 10 and he was in grade 8, he was more resourceful in what he wanted to do with his career. So I was talking to him one day and he's like, yeah, मुझे actuarial science करना है. And I'm like, okay, tell me more about it. And the next morning, and I'm like, I'm also doing actuarial science because I was like, I want to go out. I want to go study abroad. मेरा brother का जो plan बना हुआ था उसके अंदर that involves study abroad. Actuarial science, math involved करता है, and then I do not have to do any research because he has already done it, right? So I technically copy pasted what he had already done, and I सही, took it over. That's how I ended up with actuarial science, and I think it was just blessing in disguise that it ended up being what I really wanted to do. अच्छा, अच्छा, ग्रेट। और वो भी कनाडा में वो भी एक्चुअली के अंदर ही वर्क कर रहा है, सम सिमिलर कंपनी? Yes, yes. So वो भी मैं commercial lines के अंदर हूँ, वो personal lines के अंदर insurance के अंदर है. और as a matter of fact, I would say even like he's a better actuary than I am. Like he's very hardworking. Like I always try to, and I've learned over time that shortcuts do not help. जो आपने कहा instant gratification, and I've learned it a hard way. But he's that kind of a guy who, he gives it everything. Like if it requires staying up 48 hours in a row, he would do it. If you ask me to do it, I'll like, okay, what's a shortcut? क्या इसको ये इस तरह कर सकते हैं कि ये 20 घंटे में हो जाए? अच्छा, अच्छा, सही। तो आदिल, आपके मैथ्स के अलावा, फर्दर मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स क्या थे? एक था इकोनॉमिक्स, ठीक आई है, थिंक भूरिया सर पढ़ा रहे थे उस वक्त ये लेवल्स सब में, भैया और होंगे। हाँ हाँ हाँ, और आई थिंक आई हैड अकाउंटिंग which was like a privilege. I think at that point, I don't know now, but at that point having an accounting in Lyceum was a privilege. जी, जी, सर नईम सोहरवर्दी। Names Sowerdi, exactly, सही, exactly. सही। तो द थिंग इज कि आपने जो ये कॉम्बिनेशन लिया, तो अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बगैर फर्दर मैथ्स के एक्चुअली करना चाहे, इज इट Uh-huh. पॉसिबल? 100%, 100%. I would say if someone wants to do actuarial science without further math, that's totally possible. I would say the only thing you require uh, is good mathematics skills. And I would say at some point, mathematics skills also give up. Like at that point, a lot is persistence and determination. And the reason I say that is because actuarial science, university से तो आपको bachelor's मिलता है for sure, but you're not an actuary until there are about, depending on आप कौन सी life side पे जाते हैं या property और automobile side पे जाते हैं, लेकिन you have about 12 to 15 exams which are other than university, so which are not part of university. जो external governing body है वो उसको monitor करती है exams को. So अच्छा, it's a long commitment. Like it's 10 to 15 exams, each exam requiring about 250 to 300 study hours. It's a big commitment, and it takes about, like, it took me about, मैंने start किया था ये exam देना. So university is separate, but then I started taking exams in my second year of university, this external exams, in 2011, and ठीक है, my last exam was in 2019. So it took me 8 years to get my what they call the fellowship of the अच्छा, actuary. सही, सही। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट कि जैसे अगर इफ आई रिलेटेड टू द मेडिसिन फील्ड, कि एक आपकी एमबीबीएस की डिग्री होती है और एक आपके जो हाउस जॉब होता है, ठीक है? आई थिंक यूएस में देयर इज अ सिमिलर टर्म फॉर दैट, इट्स नॉट क्लिकिंग मी राइट नाउ। तो Mhm. वो जो मिला के फिर वो डिग्री होती है, सो देयर इज दिस यूनिवर्सिटी डिग्री प्लस द फेलोशिप। So I would say a little bit. So थोड़ा सा, yeah, you're right about that. Like you need both of them, but like to get a university degree, आपको ये exams की जरूरत नहीं है. So like जैसे आप अगर आप bachelor's in actuarial science करना चाह रहे,
then you can do those 5 years, or let's say आप अगर job नहीं करते co-op की तो आप 3 साल का program है, so you can do those years. The अच्छा university will issue you a bachelor's in actuarial science. लेकिन when you go find a job, all the employers would be like, what designation do you have? जैसे वहां पर पाकिस्तान में जैसे CA की designation होती है, right? आपको एग्जाम्स ठीक देने है पड़ते हैं. So सही सही what designations do you have? And designations come from these set of exams. So the first 6 exams give you something called associate, ठीक है and the next 6 or 7 give you something called fellowship. So ठीक है your package, your salary package, which company you go to is really impacted कि आपने कितने एग्जाम्स दिए, आपने आपके पास कौन सी डेजिग्नेशन है. तो आदिल माशाल्लाह आपने सारे एग्जाम्स दे दिए यू ऑल गुड ऑल क्लियर As of 2019, I was a fellow, so alhamdulillah. अच्छा अच्छा माशाल्लाह सो इज देयर एनीथिंग मोर टू इट कि आई मीन एक्चुअली में कुछ और आगे भी यानी लाइक समथिंग लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन You could do post graduation for sure. There are a lot of people coming in for post graduation studies on actuarial science. I would say जैसे कुछ fields होती है जिसमें it really helps to have a postgraduate. I would say actuary is not one of them, because actuarial science जैसे you have to think what's your final goal. जैसे अगर मुझे PhD चाहिए for example, like मुझे doctorate चाहिए actuarial science के अंदर या statistics के अंदर, then yeah, I think I'm on the right path कि मुझे post graduate करना चाहिए. But if your goal is to be a best actuary and work in the industry, then companies don't really care about your postgraduate. What companies care about is that you have a bachelor's and you are an associate or a fellow for the institute. सही सही सो अच्छा स्टैटिस्टिक्स में आपने क्यों किया साथ में मेजर Yeah, so two things there. So एक ये था कि I think जिस तरह चीजें स्ट्रक्चर आउट हुई मेरे कोर्सेज वगैरह की, it turned out कि if I took 2 or 3 extra courses, because actuarial science and statistics I have a lot of overlap among them. So if I took 3 more courses, जो मुझे ज्यादा टाइम डालना पड़ता and you have to pay a fee for it, लेकिन अगर वो 3 कोर्सेज में सम फिट कर लूं मेरे रिमेनिंग टर्म्स के अंदर, then I get double degree. So it was not like I had to do another set of courses, right? So सही that was one thing I would say. And secondly, it was those 3 courses fortunately were the same ones I was interested in, like forecasting, predictive modeling, and all that stuff. So it was like killing 2 birds with one stone. अच्छा माशाल्लाह सही सही एंड अब आप क्या कर रहे हैं इस वक्त आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं और वहां पे आप अपनी ये नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में उस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं Sure, 100%. So, मैंने over like since 2015, I've started working in the industry. I've worked in different insurance companies. So, I started off in personal lines. So, the personal lines just for because I know terminologies are very different between countries. So, I wanted to say that personal lines. What I mean by that, or first of all, before I even go in that, the path I chose, जो मैंने actuarial का path choose किया, it was regarding property and casualty. That's what they call it here. जो कि life insurance नहीं. I know in Pakistan, life insurance is the major sector for actuaries. Property, जो home insurance होता है और auto insurance होता है, that's not a big market. At least at that point in time when I was there, it was not. सही So I am in that property and auto field because in Canada, in the whole of North America, having a property insurance and an auto insurance is a mandatory by the government, right? ट्रू So it's a big market here. So उसके लिए I chose that path. लेकिन उस path के अंदर the personal lines, what I mean by that is if I own an auto, आप एक गाड़ी आप own करते हैं, आपके पास एक property है, मेरे पास एक property है, तो आपको insurance चाहिए, right? Because it's mandatory. So सही that's what personal lines is. Personal lines is more mass insurance to tailor to the whole market. Uh, I worked in 3 companies for personal lines, but recently when I joined Zurich Insurance, which is a company actually based out of Switzerland, but they have their North American branch here in Canada. उसके लिए it's more on commercial insurance, so it's more like fleet. तो जैसे एक company है, Pepsi company है, Coca-Cola company है, तो उनके पास गाड़ियां हैं. They have a fleet of cars, let's say 1,000 cars, 1,500 cars, या trucks है, तो वो travel कर रही है. So they have a risk, right? They have a liability risk. उनके पास जो truck itself है उसका insurance. So that has a very different dynamic of how you price it, because
In here, एक कंपनी का इतना खुद का एक्सपीरियंस है, लाइक व्हेन आई से एक्सपीरियंस आई मीन लॉस एक्सपीरियंस, खुद का इतना लॉस एक्सपीरियंस है कि उसको दूसरी डेटा की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट वी कॉल लाइक, अगर किसी को समझ आए, क्रेडिबिलिटी. दैट्स व्हाट वी से, क्रेडिबिलिटी. द डेटा इज नॉट क्रेडिबल और इट इज क्रेडिबल, मीनिंग के अगर एक बंदा, आपके पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, हमारा 10 साल का आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो कोई क्लेम नहीं होगा, या होगा तो एक क्लेम होगा. लेकिन सही. these companies are so big that they're credible on themselves, right? अच्छा. So my role currently is working with these big companies. उनका loss data, जो past loss data है, वो understand करना, और उसको data को लेके उसको forecast करना है future में, right? So it involves multi-layer approach because just to give you a little bit high level picture of what we do on a daily basis is, अब आपके पास 2015 के लॉसेस है, लेट्स से ये कंपनी के, आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये 5 साल का डेटा आपके पास है, उसको वो 2022 में क्या लॉसेस होंगे, क्योंकि यू आर आस्किंग फॉर अ प्रीमियम फॉर 2022. So Right. there are multiple things that could impact it. There is like just a normal inflation. There is also just a trend. Losses, government की क्या different policies impact हुई है, because government अगर आके बोलती है कि in 2017 that this loss, this particular requirement, now the limit is $100,000. Before it was 50. So your loss experience shows something else, but you have to reflect it in a way कि वो अगर loss, same loss 2022 में हुआ होता, so what it would have been, you know. So it's more अच्छा. like taking each and every loss at a point in time and seeing whatever factors just going to impact कर सकते हैं, anything external, internal, and then map all of those single point entries to the future, and then you do your magic here for modeling and finding the right amount that you want to charge. So that's my day-to-day work recently. सही सही. I mean that's pretty tough. यानी for a person in O levels, A levels, यानी मैं उसको ये कहूंगा कि जैसे ग्राफ बनाते हैं तो समझे 5 पॉइंट्स दिए हैं, स्ट्रेट लाइन तो बन गई है. अब वो कहेगा कि x इतना है तो करस्पॉन्डिंग y कितना है. दैट इज ऑन अ ग्रैंड स्केल, टेक्निकली दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है ना, Exactly. उसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल स्ट्रेट लाइन. तो वो मुख्तलिफ Exactly. लेयर्स हैं जिसके हिसाब से आप चीजें निकालते हैं. सो आई मीन दैट इज Exactly. समथिंग. अच्छा, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है तो ये ऑफ कोर्स वहां पर ओवरनाइट मेरे ख्याल से पॉलिसीज तो चेंज नहीं होती होगी. Of course. उनका जो भी प्रोसेस होता होगा, तो उसमें अगर कोई आगे चल के पॉलिसी चेंज होती है तो वो कैसे आप लोग उसको कंसिडर करते हैं? Pricing के अंदर? हम्म. या श्योर. सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2015 का जैसे एक क्लेम है, एक पेप्सी ने एक क्लेम किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का. ठीक है. उनका एक बड़ा क्लेम था जो हमारी कंपनी ने पे आउट कर दिया बिकॉज वो कवर्ड था. नाउ लेट्स से वो क्लेम ऐसा था कि एक ट्रक वाले ने किसी एक थर्ड पार्टी को जाके मार दी थी गाड़ी. So in North America, one thing I think you would know, sir, but just for the general population, liability is the biggest attribute for your claims. Like कोई भी आपको आकर sue कर सकता है बिल्कुल. कि you did this to me and now you are liable for damages. Like literally, I can go right now and sue anyone. Then we can go to the court and then we can fight, right? So these companies, like जैसे अगर मैं कोई ट्रक के सामने आ जाऊं और मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं कि मैं गिर गया क्योंकि कोको कोला की ट्रक देख ली. नाउ आई नो कोको कोला इज अ बिग क्लाइंट, देन आई विल टेक देम टू द कोर्ट एंड we'll figure it out what happens, right? So let's say कोको कोला की ट्रक ने किसी को थोड़ा सा हिट कर दिया था, अब वो बंदे ने $1 मिलियन का क्लेम लेकर आया. लेट्स से इफ इट वाज जेन्युइन एंड इट गॉट पेड आउट. अब क्या हुआ कि 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि जस्ट टू प्रोटेक्ट द जनरल पॉपुलेशन, our minimum liability amount would be moved from 1 million to 2 million. So अब क्या होगा कि भाई मिनिमम कवरेज जो थी वो 2015 के अंदर 1 मिलियन की रिक्वायर्ड थी इंश्योर्ड को, but in 2018 government made it mandatory. Now it has to be 2 million. So now you look at this and this is just one claim. So you look at this one claim and you're like, अगर ये claim 2022 में हुआ होता तो क्या मेरे पास 1 मिलियन डैमेज में आता या वो बंदा मुझे $2 मिलियन डैमेज करता, क्योंकि अब उसके पास वो ऑप्शन है, राइट? he or she did not have an option in 2015, लेकिन अगर ये क्लेम 2022 में आएगा तो maybe they would have gone for 2 million, right? So it's looking at past data points and based on different factors, asking yourself, and again, this is not as subjective as I'm making it sound. It's very objective and stuff, but you're trying to take each and every data point and
asking these questions and projecting it of how this loss would have looked if it would have happened in 2022, because that's what you're trying to price, right? So you're taking all the prior data points, bringing it to 2022, and then seeing, okay, ये सारे losses जो है 2022 में ये amount लगती है. Okay, now I take multiple averages and I figure it out how I want to price it. But the end goal is to take as much data as you have and project everything to the time period you're looking at. सही सही। जैसे आजकल लोग बातें करते हैं बिग डेटा के बारे में, एंड डेटा इज द न्यू वेपन इन दैट सेंस, या फिर बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या मशीन लर्निंग की, तो क्या ये चीजें आपकी फील्ड में एप्लीकेबल होती हैं? Yeah, sure, 100%. I think it has disrupted every industry. So you're right कि यहाँ पर भी I have मुझे कोई इंडस्ट्री दिमाग में नहीं आ रही जिसको इसने डिस्टर्ब नहीं किया है, मशीन लर्निंग, एआई ने. So on our industry, I can speak about that is कि for AI, for example, आजकल क्या हो गया है कि गाड़ियों के अंदर उन्होंने टेलीमेटिक डिवाइसेस लगाना स्टार्ट कर दिए हैं टू गेट मोर डेटा अबाउट यू. सो जैसे व्हेन यू गेट योर ऑटो इंश्योरेंस here in Canada and US, वो आपको क्या करते हैं कि ऑप्शन दे रहे हैं कि if you, so your insurance premium, let's say is X amount. So let's say just say $2,000 a year. That's your insurance premium. But they will tell you कि अगर आप ये डिवाइस लगा लेंगे ना, ये हम आपको पोस्ट कर देंगे. अगर आप अपनी डिवाइस गाड़ी में लगा देंगे या आप अपनी ऐप ये डाउनलोड कर लेंगे गाड़ी के लिए, तो हम आपको 10% ऑफ दे देंगे. So now your premium would be 1,800 instead of 2,000. So any person who is trying to make ends meet, they're like, yeah, why not, right? मैं ले लूंगा $200 extra. Just मुझे एक डिवाइस तो लगाना है गाड़ी के अंदर. Yeah, I just have to download this app. And then what happens is they don't realize it that there's so much data being transferred back to the insurance company on a second by second basis, like your speed, how much speed you're driving, how's your braking, how's your acceleration, आप कितना गाड़ी चला रहे हैं, आप किस time of the day पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके साथ कितने लोग बैठे हैं. Like it has every millisecond of data when you're driving the car sending to the insurance company on a second by second basis, right? So what insurance company does is it has its all data. अब वो क्या करती है कि कुछ provinces के अंदर, कुछ states के अंदर legal है ये information use करना to price your policy. कुछ states के अंदर ये legal नहीं है. So depending on which state you are in, some companies use this information. जब आप उसके पास next year renewal के लिए जाओगे, तो उनको पता होगा कि अच्छा लास्ट ईयर तो मुझे इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है ये बंदा जो है वो स्पीडिंग बहुत करता है, ब्रेक बहुत हार्ड मारता है और ये गाड़ी बहुत चलाता है, मतलब नॉर्मल बंदे से ज्यादा. तो अब मैं तो इसको 2,000 की जगह 3,000 प्रीमियम कोट करूँ, राइट? सो सम कंपनीज डू दैट इन द स्टेट्स वेयर इट्स लीगल. लेकिन जिस स्टेट्स के अंदर इलीगल है, द कंपनीज हैव देयर ओन मैकेनिज्म. तो वहां पे वो प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती 2,000 से ज्यादा, लेकिन वो क्या करेगी, आपको आपके लिए वो रिन्यूअल है ना बहुत टफ कर देगी. सो दैट they will send you paper documents to fill out rather than doing application online. They will tell you कि send us this, send us that, ताकि आप खुद दूसरी कंपनी के पास जाना पसंद करेंगे. So it was more like risk management in a way, not pricing related but non-pricing related. So that's what the companies use. Like this is one of the things. And in terms of machine learning, like all this data that the companies are gathering, ये डेटा तो आ गया, अब इसको डेटा को यूज कैसे करना, राइट? नाउ हाउ दे यूज दिस डेटा इज बाय फिटिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑन दिस डेटा, कि जैसे डेटा आ रहा है एवरी डे मिलियंस ऑफ रोज आ रही है डेटा की, हाउ दिस एल्गोरिथम दे क्रिएट टेक्स इन दैट डेटा और ऑटोमेटिकली ऑन अ डेली बेसिस अपडेट्स दिस मॉडल. तो जैसे अगर कल मेरे पास कोई बंदा पॉलिसी कोट करने आता है, तो the machine learning model already knows the data from yesterday, कि वो data को वो run करके models, it spits out a premium tomorrow, which accounts for more data which I've gathered yesterday. So it is like on like एक के बाद एक, like your data is always improving. अच्छा अच्छा, तो ये जैसे आदिल आपने वर्ड इस्तेमाल किया था कि जब मैंने आपसे बिग डेटा का सवाल पूछा तो आपने कहा डिसरप्ट, ठीक है ना, कि ये जो नई चीजें हैं बिग डेटा, एआई, मशीन लर्निंग, ये चीजें को डिसरप्ट कर रहा है. डिसरप्शन किस सेंस में है? फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कॉमन सिटीजन पर्सपेक्टिव, किस लिहाज से? यानी इज इट मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट इन सम सेंस फाइनेंशियली फॉर द कॉमन पीपल? क्या क्या आपका परसेप्शन है? Of course. So
When I say disruption, I would say, sir, it's a multi-level thing. So first of all, with this big data, the thing comes, there's a data gather करना or kind of having these devices in place, जैसे गाड़ी में device लगा दिया या कैमरे ज़्यादा लगे हुए, so it's feeding you more data. Data gather करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन store करना और उसको किस तरह use करना, that requires a strategy. So what I have noticed here in North America at least is that big companies who can afford to store this data, who can afford to run complex models on this data, who can afford to do whatever they want, they can really benefit from this expertise. Now, what that does, when big companies have this access, they use this data, they have the financial backing to do this, it drives the smaller people out of the market. So, जैसे कोई छोटी कंपनियां हैं जो एक टाउन के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जो टाउन को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी, बिल्कुल सारी बिल्कुल छोटी कंपनियां they go out of business because they can't afford to do all of these things with data. So now, over time, what we're seeing is what I call the consolidation of our industry. So, जो पहले 50 कंपनियां थी, now there are 10. So over time, it just gets smaller and smaller. So that's what when I say disrupt is, at that point it leaves less choices for us as consumers. It creates a monopolistic culture, right? Like अगर at the end of the day दो ही कंपनियां हो जाएगी, then they can charge whatever they want, right? So it reduces it. So yeah, economics आ गई, right? Like that, it reduces the choice that you have, I would say. सही सही बिल्कुल सही अ, और क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे आई मीन आप जो आपका एक्सपीरियंस है कनाडा का फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल और इस वक्त इन द कॉर्पोरेट सेक्टर आप काम करते हैं तो हाउ आर यू फाइंडिंग माशाल्लाह कनाडा में माशाल्लाह आपको 10 साल 11 साल हो गए Yeah, सो yeah, हाउ yeah. सी एक्सपीरियंस भी यानी कैसा आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा सा शेयर कीजिएगा Sure, 100%. I would say, and I'm assuming कि हमारी जो audience है वो ज़्यादा OA level के students हैं. So tailoring to that, I would say कि and based on my experience, मुझे लगता था कि यार बाहर निकल लो, वहाँ जाके freedom बहुत है, और ना बस बाहर निकल लेते, बाकी figure out कर लेंगे. But या घर से दूर चले जाते हैं, यहाँ तो बहुत restrictions है, हमने अब्बू ने डाली हुई है, अभी चले जाते हैं. लेकिन let me tell you one thing is not as easy, and you will first 2 weeks आपको जितनी पार्टी करनी है आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. लेकिन when in third week it hits hard, right? Like आपके पास आप यहाँ पर used to हैं different lifestyle के, वहाँ पर आपको खाना भी खुद बनाना है, अकेले बैठ के भी खाना है, प्लेटें भी खुद ही धोनी है, काम पे जाके दूसरे लोगों की भी प्लेटें धोनी है if it needs to, and it's a very different lifestyle. So a lot of people, if they're not ready for it mentally, I think mentally is a strong word in here. So mentally अगर वो ready नहीं है, it will take a toll on them. So either they will struggle mentally, they will learn it a hard way, or they will just give up. I've seen a lot of people क्या वो आते हैं, एक साल पढ़ते हैं, then you're like बस बहुत याद आ रही है घर की, and that's very very understandable. But like I can't take it, like I have to go. So one thing I would say is, अगर आप आ रहे हैं तो अच्छी चीजें आप जो देख रहे हैं, that's part of it, I understand, but there's also this other side of it, the hustle, the effort you have to put in, other than studies, working 2 or 3 part-time jobs to make ends meet, if you don't have that financial capacity back home, for example. उसके बाद cultural shift, right? It's a very different culture. जो आपको यहाँ चीजें जो differently की जाती है, you're like, I have not seen this in my past experience. So those things are a cultural shock to you. It takes time to fit in. So keep that in mind, I would say. Or that's one thing I've realized. But one thing I would always say is, this everything comes to light when you take accountability. So मैंने देखा है कि खास तौर पे पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हो गए या लोग हो गए, मैं उनसे ये कहता हूँ कि हमेशा टेक अकाउंटेबिलिटी के, हमेशा हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया तो मेरी लाइफ खराब हो गई, ये सर ने ये कर दिया तो मेरी लाइफ खराब हो गई, ये स्कूल ने ये कर दिया तो मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई. We never take responsibility for our actions. As soon as you start seeing कि मैं किस तरह चीज डिफरेंट कर सकता हूँ, even though in some situation be like मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, but as soon as you start telling yourself that story, आप ये नैरेटिव अपने आप को बताएंगे ना कि इसमें मेरी क्या गलती थी और मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपने फौरन से कंट्रोल जो लगाम होती है वो अपने हाथ में ले ली.
अब आप इस पे रिलायंट नहीं है कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इससे मेरी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी, या ये सर शो अप होंगे नहीं या क्लास में, उससे मेरी कैसे इम्पैक्ट होगी। या कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में, यार वो सर शो अप नहीं हुए 2 दफा क्लास में, इस वजह से मेरा ग्रेड जो है वो ए से बी आ गया। वेल, टेक अकाउंटेबिलिटी। अगर सर शो अप नहीं हुआ, you do it yourself, right? So that's one thing I would like to say is accountability has really helped me, and discipline and focus, I would say. सही सही। सो मेरे जहन में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन रही आदिल आपके साथ, एंड मुझे खुद एक्चुअली के बारे में इतना नहीं पता था। इट्स वेरी वेरी एनलाइटनिंग फॉर मी, और आई थिंक व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि आदिल ने जिस तरीके से पूरी अपनी जर्नी बताई, एक एक चीज उसने एक्सप्लेन की, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 7 ऑल द वे टिल हिज ए लेवल्स, यूनिवर्सिटी, इसका वर्क एक्सपीरियंस, कनाडा में रहना, वहाँ पे एक को एग्जिस्ट करना बाकी लोगों के साथ, उसके प्रोज एंड कॉन्स जो भी था। यानी किस चीज, असल चीज जो मुझे आदिल की बातों से लगा वो ये है कि आपका अपना माइंड सेट है कि आप किस तरीके से चीजों को लेना चाहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि एवरीथिंग विल बी सर्व्ड ऑन अ प्लेटर फॉर यू। हर चीज के लिए मेहनत लगती है, और वो मेहनत इंसान पाकिस्तान में भी करता है, बाहर जाके भी करता है। वेन एवर वेर एवर यू गेट अ चांस, तो आपको जिंदगी में वो मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटी वुड बी नॉकिंग ऑन योर डोर। अब डिपेंड करता है आप डोर हल्का खोलते हैं या पूरा खोल लेते हैं। सो दैट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू आदिल फॉर कमिंग ओवर। सो Anytime. इंशाल्लाह व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू एवरीवन, टेक Thank you so केयर, much. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.